Hi everyone and welcome back to my channel, and in this video we are going to study some key terminologies or the key terms of political science, and I'm going to start with the A word series. So like all the words starting up with A, we are going to study about that, and the most importantly those are part of political science. And if you are studying with the basics, so you should know some key terminologies in political science. So we will begin, but before we start, please subscribe to my channel and hit the like button. So I have enlisted all the words starting up with the A, and this is the word series A. So in another video I'm going to come up with B word series and so on, like C, D, E, F till the last word we'll be having in the vocab. So A word series starts with absolute majority in this video, and we are going to study till autonomy. So we'll start with the absolute majority. So the strategy for this video is that I'm going to read the slides and then I'm going to explain what the slide is talking about, and I'm also going to give you some examples or any relevant example if applicable in this video. So absolute majority, the majority of the electors, not just those who voted, majority of the entire membership, or a situation in which one person or party wins more than half of the total votes in an election. So इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब जो फॉर एग्जांपल एक पार्लियामेंट है और उसकी जो मेंबरशिप है फॉर एग्जांपल वो 300 है, ठीक है, तो जो टोटल मेंबरशिप होती है, ठीक है, तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। या एक सिचुएशन है जैसे कि फॉर एग्जांपल वोटिंग दी गई है और एक पार्टी जो है वो रिक्वायर्ड वोट्स से ज़्यादा वोट्स ले ले, लाइक विन्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन, ठीक है, तो मतलब इस तरह इसका ये मतलब है लाइक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो पार्लियामेंट में और या एक हाउस में अगर जो है टोटल जो मेंबरशिप है वो है फॉर एग्जांपल हम ले ले 300 है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो अगर उसके अंदर मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है, तो मतलब अगर हम मतलब 160 इस तरह 155 इस तरह के वोट्स आ जाए ना, सो दिस मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक है लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, तो लोकसभा की जो मेंबरशिप उसकी या एब्सोल्यूट मतलब उसके टोटल सीट्स जो होती हैं वो 545 होती हैं, तो मतलब 273 जो है वो फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनता है, ठीक है, लाइक मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब हम एकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज़ अ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट दैट डज नॉट हैव अ सेम बाइंडिंग फोर्स एज अ ट्रीटी, एंड एकॉर्ड इज़ ऑल्सो एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स और इवन नेशंस लाइक अ फॉर्मल पीस एकॉर्ड दैट प्रिवेंट्स वॉर। सो अच्छा, एकॉर्ड इज़ मोस्ट लाइक इट्स मोस्ट सिमिलर टू एग्रीमेंट, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा जो है बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, ठीक है। सो व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट और अ ट्रीटी जो है ये सब, और अ कवेनेंट, ये सब सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो ये बनाए जाते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। Accountability, so in political science accountability या political science or even the like governance and public policy, इसके अंदर जो है accounting refers to the concept of holding government official, public institutions and organizations responsible for their actions and decisions। ठीक है, मैं पूरा रीड नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है तो इट इज़ डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है इट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, तो अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स होती हैं इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, और ओके इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उनको लिमिट किया जाता है थ्रू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बाकी जो अदर रिजीम्स होते हैं या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जैसे टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके अंदर जो है कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होता, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि द पर्सन और द रूलर और द किंग और एम्परर जो भी होता है ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड इवन अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल। अभी हम एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो इट एन एक्ट typically refers to the formal piece of legislation that has been passed by the legislative body, for example parliament या congress, तो ठीक है, it is a primary source of law that sets the rules, regulation, provisions governing various aspects of the society. Acts are also known as the statutes, laws or ordinance depending on the jurisdiction. An act goes through a legislative process which may include drafting, debating, voting, approval by the legislative body. Once an act is enacted,
सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। तो एक्ट क्या होता है बेसिकली, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट आउट किया जाता है और जो पार्लियामेंट होती है या कांग्रेस होती है वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है एज अ प्रोविजन और एज एन ऑर्डिनेंस, वो बाद में जाके लॉ बन जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है उसका, पॉलिटिकल चैनल, ड्राफ्टिंग होती है, डिबेट होता है, वोटिंग होती है, फिर अप्रूवल होता है। सो दिस इज़ एन एक्ट। एड हॉक कमेटी, सो इट इज़ अ टेम्प्रेरी स्पेशल पर्पज़ कमेटी, और ये ऑपोजिट होती हैं टू स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ में क्या होता है, लाइक दे हैव एन ऑन गोइंग डिफाइंड रोल विद एन ऑर्गेनाइजेशन और लेजिस्लेटिव बॉडी, जबकि एड हॉक कमिटीज़ आर क्रिएटेड एज द नीड अराइजेज एंड डिसबैंडेड एज वंस देयर टास्क इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू आ गया, तो उसके लिए एक कमेटी बना ली, टेम्प्रेरी एक मीटिंग सी होती है जिसका जिसका कोई स्पेशल पर्पज़ होता है, और वो पर्पज़ ख़त्म होने के बाद वो कमेटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एड हॉक कमिटीज़ कैन बी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट पर्टिकुलर मैटर्स, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन और एड्रेस यूनिक चैलेंजेस। जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कोई स्पेशल इशू को डिस्कस करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और जो कि फिर पर्पज़ ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है। Adjournment, so it is a formal motion to end the current meeting with the expectation that the assembly will reconvene at a later time or date. So adjournment is a common and necessary part of the functioning of legislative bodies, allowing members to rest or consult with colleagues or to attend the other matters before returning to continue their work. Adjournment in the context of legislative bodies like parliament, congress, अच्छा legislative क्या होता है, मतलब जहाँ पे बिल पास किए जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट या कांग्रेस जो होती है, ठीक है, जहाँ पे डिबेट होती है, ड्राफ्ट बनते हैं, ये सब, और अदर डेलिब्रेटिव असेंबलीज रेफर्स टू द टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ सेशन और मीटिंग। तो क्या होता है, एडजर्नमेंट उस चीज़ को कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल टेम्प्रेरीली किसी सेशन या मीटिंग को सस्पेंड किया जाए, ठीक है, या स्टॉप किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, और लेटर फिर किसी अलग डेट पे या लेटर इन द सेम डे वो मीटिंग वापस रिकन्वीन की हो जाती है। Adjournment debate. So during an adjournment debate, a member of the legislature, often referred to as an adjournment mover, presents a specific issue, question, problem to the government minister. तो इस डिबेट में क्या होता है, it is a short debate that takes place in a legislative body, typically at the end of the sitting day or session. It allows members of the legislative body to raise specific issues or concerns with the government minister. तो क्या होता है, जो बंदा एक डिबेट प्रेजेंट करता है उसको एडजर्नमेंट मूवर कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम पे होता है या क्वेश्चन पे, और वो मोस्टली तब होती है ये डिबेट जब एंड ऑफ द सेशन होता है। ठीक है, तो इस पे डिबेट की जाती है किसी अच्छे स्पेसिफिक इशू पे, ठीक है, तो और ये लेजिस्लेचर में होती है, पार्लियामेंट में या कांग्रेस में। Advise and consent. So advise and consent is a term used in US Constitution that describes the US Senate's power to review and approve treaties and the presidential appointments। ठीक है, तो ये एक टर्म है जो कि US कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सेनेट्स पावर। अच्छा, एक सेनेट होता है और एक होता है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये US में उसकी पार्लियामेंट के दो वो होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ चीज़ों को रिव्यू करते हैं, अप्रूव करना होता है। सो दिस इज़ अ टर्म रिलेटेड टू दैट, ट्रीटीज़ को अप्रूव या रिव्यू करना होता है या फिर प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स को। सो दिस वाज अबाउट द advise and consent. Agenda and agenda settings. So an agenda refers to the list of issues, topics, policies that are given priority and attention by the political actors, government officials or the policy makers. So political agenda, media agenda, public agenda, government agenda, these are the various forms or kinds of the agenda. Agenda setting is like determining which like public policy questions will be debated or considered. तो एजेंडा क्या होता है, मतलब ये एक प्लान होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है बाय पॉलिटिकल एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल या पॉलिसी मेकर्स, और ये कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करता है, पॉलिसीज़ को जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या अटेंशन देनी चाहिए। और इसके अंदर देयर डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि पॉलिटिकल एजेंडा या गवर्नमेंट एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, मीडिया एजेंडा, ये हर डिफरेंट काइंड्स हैं। एजेंडा सेटिंग जो है वो उन क्वेश्चंस के साथ डील करती है जो कि कंसिडर किए जाएंगे, डिबेट किए जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग और एनी कमिटी या कुछ भी।
Altruism. So, altruism is a political or ethical principle that involves acting in a way that prioritizes the welfare of other and the greater good over one's self interest. ठीक है, तो ये एक वो फीलिंग है या इमोशन है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड कीपिंग असाइड योर सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल और एथिकल प्रिंसिपल है जो कि इट रिवॉल्व्स एंड it prioritizes the welfare of the people and good for the people. अमेंडमेंट, अच्छा ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा बट स्टिल आई एडेड दिस टर्म इन द ए वर्ड सीरीज़. तो अमेंडमेंट जो है इट रेफर्स टू द formal change or addition made to the constitution, law, policy, document. Amendments are typically made to update, modify and expand the existing text to accommodate changing circumstances, or amendment is made to reflect new political realities. So there's different kinds like constitutional amendment, legislative amendment, policy amendment. तो अमेंडमेंट क्या होता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए और या एक्सपैंड करने के लिए या किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अमेंडमेंट की जाती है टू द एग्जिस्टिंग रूल्स या जो लॉज होते हैं उन चीज़ों को, एग्जिस्टिंग चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, सो एज टू ब्रिंग न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज़. ठीक है, और ये इसलिए भी की जाती हैं बिकॉज देयर आर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो चीज़ों को अमेंड करना ज़रूरी होता है. तो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है, ठीक है, पॉलिसी अमेंडमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स हैं. एनार्की पे मैं ऑलरेडी एक स्मॉल वीडियो बना चुकी हूँ, सो आई पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एनार्की इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल philosophy or condition that is characterized by the absence of centralized authority, government or a ruling hierarchy. Anarchy refers to the absence of centralized and आर्चिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट एट द ग्लोबल लेवल. ठीक है, तो ये क्यों होती है, लाइक एनार्की होती है ड्यू टू द लैक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, स्टेट सॉवरेनिटी, पावर पॉलिटिक्स. ठीक है, तो एनार्की मैं आपको सिंपली बताऊं, सो इट इज़ द लॉलेसनेस. ठीक है, एनार्की होती है जिसके अंदर स्टेट्स जो हैं फिर दे परस्यू देयर सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, सो एज टू हैव चेक एंड बैलेंस ओवर द स्टेट्स इंटरेस्ट या उनके एक्शंस को जो है रेगुलेट करे. तो ठीक है, एनार्की का टर्म जो है दैट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद IR एज वेल. Appellate court, ये एक it is a court that is also known as an appeals court or the court of appeals, that a type of judicial body that is responsible for reviewing decisions made by the lower trial courts. For example, lower trial court में एक केस था जो कि फिर फर्दर पास किया गया, तो appellate court जो है उसके डिसीजन को रिव्यू करती है और देखती है कि जो अपील्स हुई होती हैं उनको रिव्यू करती है. अपॉइंटमेंट पावर्स, तो अपॉइंटमेंट नाम से द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अपॉइंटमेंट पावर्स इन पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द अथॉरिटी और एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, typically an executive leader such as the president, governor, prime minister, to appoint individuals to various positions within the government. So like these appointments can include appointments to key administrative or regulatory or advisory roles such as the cabinet members, agency heads, judges, ambassadors and other high ranking officials. तो ये वो powers होती हैं एग्जेक्टिव लीडर की जो कि एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रोविंशियल लेवल पे या यूनिट लेवल पे गवर्नर होता है. तो वो इन चीज़ों को जो है रेगुलेट करते हैं, उनकी पावर्स होती है. दीज आर बेसिकली द जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर ऑफ देम, कि वो जो है लोगों को अपॉइंट करते हैं और हायर रैंक ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं. Aristocracy. तो aristocracy is a form of government or social structure in which a small, privileged and often hereditary elite group holds power and authority. In aristocratic system, leadership and decision making are concentrated within a specific class of individuals who are considered the best and the most noble in the society. अच्छा, यूके का जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स है. ठीक है, उसकी जो पार्लियामेंट है, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं वो हेरिडिटरी एलीट ग्रुप होता है जो कि फॉर एग्जांपल पावर पास ऑन होती रहती है. पाकिस्तान में देख लें जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो फॉर एग्जांपल PPP,
PMLN, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लें, या ANP है तो मतलब PMLN को देख लें तो पहले लाइक नवाज शरीफ, फिर उसके बच्चे, इस तरह PPP को देख लें तो पहले भुट्टो था, फिर बेनज़ीर, इस तरह मतलब फिर जरदारी, बिलावल, उस मतलब बिलावल, इस तरह जो है ये एक एरिस्टोक्रेटिक और वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है। Assembly. An assembly is typically refers to the formal gathering or meetings of individuals, often representatives or delegates, to the purpose of discussing, debating, and making decisions on matters of public or political importance. Assemblies can take various forms and they serve different functions in political system. तो जैसे legislative assembly होती है, constitutional assembly होती है, general assembly, popular assembly, political party assembly. तो ये एक formal gathering होती है, meetings होती हैं जो कि कुछ चीज़ों को discuss करती है, debates होती हैं. तो this was all about assemblies. Authoritarianism is a form of government that is characterized by a strong central authority and limited individual freedoms. In an authoritarian system, power is concentrated in the hands of a single leader or a small group of individuals, and there is often little or no political pluralism और मीनिंगफुल ऑपोजिशन. तो अथॉरिटेरियन जो एक बहुत सेंट्रलाइज और टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई ऑपोजिशन का सिस्टम नहीं होता है सच, और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं होती, ठीक है. ये एक स्मॉल ग्रुप होता है जिनका एक लीडर होता है, दैट इज़ वेरी मच पावरफुल, और इसमें बहुत कम इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, लाइक दैट इज़ वेरी कन्फाइंड. Authority refers to the legitimate power or the right to make and enforce decision, give orders and make rules and laws. Authority is a fundamental concept in the study of political systems and governance as it underpins the functioning of governments and other political institutions. तो authority जो है वो power होती है, legitimate power मतलब जो accepted power होती है, ठीक है. तो वो जो है डिसीजंस को एनफोर्स करती है, ठीक है, ऑर्डर्स देना, रूल्स लॉज बनाना, ठीक है. तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. एंड दिस वाज अबाउट अथॉरिटी. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर. अच्छा, अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेट पावर होती है, जबकि पावर जो होती है इट इज़ ऑल्सो फोर्स. लाइक एक चोर के पास भी पावर हो सकती है, एक कॉमन मैन के पास भी पावर हो सकती है, ठीक है. लेकिन अथॉरिटी जो है वो मोस्टली फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड अदर पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रेफ़र करती है. Aristocracy, so it is a form of government in which a single individual, and often referred to as an autocratic or autocrat ruler, that holds absolute and unchecked power. In an aristocracy, this individual has authority over all aspects of the state, including governance, lawmaking, decision making, without meaningful constraints or limitations from other branches of the government, political opposition, or civil society. So aristocracies are characterized by the concentration of power in the hands of a single leader who may hold titles such as king, emperor, dictator, president for life. Aristocracy जो है सिंपली उस रूलर को कहते हैं, किंग, एम्परर या जो भी प्रेसिडेंट इवन जो होता है फॉर एग्जांपल, उसकी पावर्स जो है बहुत अनचेक्ड होती हैं, ठीक है. तो वो हर एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट को गवर्न करता है. Autonomy is the concept of self-government and the ability to make independent decisions without external interference or control. In the state of having freedom and authority over its own actions, choices, decisions. In the context of political science, autonomy refers to the self-governance or a political entity or region. This might involve self-rule for the specific territory or degree of independence from a larger governing authority. अच्छा, एक स्टेट में ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल सेंटर के पास अपनी अथॉरिटी है और वो जो है कुछ ऑटोनॉमी मतलब जो प्रोविंसेस हैं दे आर ऑटोनोमस इन देयर ओन decisions. So this marks the end. I hope you like the video. So like, subscribe and share. So till then, take care. Bye.